5 years, there's a massive increase, 151% increase in sexual offences against children. Now the Supreme Court has said that the legislature should step in. What will that lead to, and why is such a rash of crimes really happening? Let's talk about it. We have in our studio Yashwant Jain of the National Commission for Protection of Child Rights. He's a member there. And we also have Joseph Gatia with us. He's a child rights expert. First to you, Mr. Gatia, what do you make of this Supreme Court order? Do you think this is a step in the right direction and the legislature will now move quickly to ensure that child offenders, those who commit offences against children, are punished more strictly and justice is delivered quickly and in more numbers? I think on the outset I would like to congratulate Supreme Court for pointing out towards this need of a special law for child rape. That is a long pending demand by civil society. Many of the groups have been demanding that. I think when we have a sweeping age of 18 years under child definition, then the focal point of very young children below 10 years doesn't get very much attended. So I think by Supreme Court pointing out to the legislature that there should be a special law, I think this categorization would come into that. So I think it will be it is a very positive direction by Supreme Court, and I think we should welcome that. Mr. Jain, we've seen that there was an act protection of children against sexual offences that came into being, I think, in 2012. But even after that, we've seen that pendency in some cases is more than 80% high. What is happening? Is it just because there's too many such incidents taking place? What is the right way to address it apart from stricter punishment? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चों के लिए कानून लाया गया था, बड़ा सोच के लाया गया था, उसमें जो निपटारे की गति बहुत कम है। इसके कई कारण हैं। तो जो हमारे मैन पावर चाहिए, हमको जितने न्यायालय चाहिए उतने हैं नहीं। इसको अगर हम समाज में मैसेज देना चाहते हैं और अपराधियों को समझ देना चाहते हैं कि अगर वो अपराध करेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे, उनका निपटारा जल्दी होगा, तो इसके लिए हमको न्यायालयों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जागरण करने की ज़रूरत है। और इसके लिए राष्ट्रीय बाल आयोग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है, आंकड़े भी हम जुड़ा रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि जिस गति से केसों के निपटारे होने चाहिए, जो कन्विक्शन रेट बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसमें काम करने की ज़रूरत है और आंकड़े देश के सामने हैं और ये कड़े कानून बनाए गए बच्चों को इस अपराध के लिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दिशा निर्देश दिया, एक नई बहस तो देश में शुरू होगी। जो बच्चे हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि और कड़े, there should be stricter laws. So what sort of stricter laws? Because at the same time it said castration is not the right way to go. देखिए, ये अलग अलग देशों में प्रचलित है, लेकिन उसके कोई एविडेंस नहीं है कि जिन देशों में जो बदियाकरण या नपुंसक बलात्कारियों को बनाने की बात है, बनाया जाता है, उनसे कोई बच्चों के प्रति अपराधों में कोई कमी आई है, ऐसा नहीं है। और भारत के दृष्टि से कितना उचित है नहीं है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन बलात्कारी because it's also said that it will be barbaric, there will be side effects on people, and even the Verma Commission did not support castration. Justice Verma Commission actually rejected this entire thing. कठोर सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन इस प्रवृत्ति से जिन देशों ने इनको स्वीकार किया है वो क्या सफल हुए हैं? तो हमारा ये मानना है आयोग का कि कानून को फोर्सफुली लगना चाहिए, कानून समाज तक जाना चाहिए, लेकिन समाज में बच्चों के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ना चाहिए, देखने का नज़रिया बढ़ना चाहिए, समाज में अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। बच्चे जिनके पास रहते हैं उन सारे लोगों को, चाहे वो हॉस्टल अधीक्षक हो, टीचर हो, घर में पेरेंट्स हो, बच्चे आज सब जगह अब्यूज हुए हैं। आपके हमारे पास जो आंकड़े हैं, बच्चे अपने दादा से, माता से, टीचर से, अपने संत से, अपने जो रिस्पेक्टेड पर्सन उनसे, बस के ड्राइवर से, बच्चा कहीं सुरक्षित नहीं है। तो कानून एक विषय है, लेकिन साथ में बच्चों को देखने की दृष्टि भी समाज में बदलनी चाहिए और सबको अवेयर होना पड़ेगा। आपके हमारे कोई भी बच्चे इसके शिकार हो सकते हैं, इसलिए जागरूकता। What is the reason, Mr. Gatia, that children are being assaulted so much sexually? There's an increasing tendency among offenders to target children. See, there are a lot of myths about. One of the prominent reason which was found in earlier studies was that a lot of people, uneducated people, feel that by having sex with a very child, they'll get rid of the sexually transmitted diseases as such. Secondly,
the whole attitude towards the children has not yet been established in our society. And children are more vulnerable. And children are more They're more vulnerable. trusting also. More trusting also. So, on the whole, we have not yet recognized child as an individual entity. And because in the criminal graph also, the police or the other administration think, "Arey, bachche ka case hai, this is a child's affair." So that tendency of neglecting it, keeping it pending, not that urgency. So, do you feel, do both of you feel that this new law, the way the Supreme Court wants it, a child category should be there, 10 years and below, do you think that will change things? And stricter, of course, stricter punishment? I have been demanding this for a very long time, that while we accepted the UN Convention's definition of anybody who is below child. Because you're saying years, castration hasn't worked in other countries. Do you think this will work? No, castration has not worked, but at the same time, they have other deterrent measures which we have not yet introduced. Okay. And secondly, the castration. Such as what are the other deterrent measures? See, for example, they track the person, and if there is a second time offence, then there is a more stricter punishment there. And there's this thing about naming and shaming as well, Naming and putting a list shaming, out. and also keeping a proper track record. Then what are the rehabilitation measures if the person is not responding to the rehabilitation processes, then there is a more check is on that person. So that thing is missing in our system. जैन साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे पास समय बहुत कम है. देखिए, इसमें जो कड़े प्रावधानों की जरूरत है. अगर कोई व्यक्ति समाज के बच्चों के लिए एक आतंक हो जाए, बच्चों का जीना मुश्किल हो जाए, तो वैसे लोगों के लिए सब प्रकार के उसमें समाज विधायिका कोर्ट सब तय करे कि उससे बच्चों की मुक्ति मिलनी चाहिए, बच्चे सुरक्षित रहे उनसे. और उस प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है जो लगातार हैबिचुअल हो गया है बच्चों के साथ गलत काम करने का, तो उसके लिए और कठोर क्या हो सकता है, इस पे भी विचार सबको करना चाहिए. और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है उस पे संसद विचार करेगा. Let's hope that there is serious cogitation on that, and we get a stricter and more effective law. It's the effectiveness at the end of the day that really matters in terms of general when awareness among society is also very important. All right. Thank you so much for joining us this evening to talk about this important subject. Let's hope that something really materializes very soon on this. Let's